So we'll talk about formation of universe. That it is like a balloon. We can compare it with like a balloon. That universe is expanding like balloons. If you blow the air to the balloon, the planets are moving apart from each other. So planets are moving away from each other. In the beginning, there was a gaseous nebula, and that it started coming together, and then compression started. So then compression started. Therefore, initial Earth was in the form of liquid magma. So it was in the form of liquid magma. And this liquid magma started rotating. And because of this, heavier particle came at the center, while lighter particle move away from the center or move to the periphery. And their outermost part get cooled. Because first the lighter part get cooled, this outer part get cooled, and this started releasing of gas. Then this got cool and start releasing of gas. Then gases started coming out, and these gases held by Earth's gravity. So because of outer part started getting cooled, and it started releasing gases, and these gases are held by Earth gravity, and the atmosphere form is called primitive atmosphere. Atmosphere form is called primitive atmosphere, and it was lost because of the solar winds. सोलर विंड की वजह से प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर वॉज लॉस्ट. सो देयर सन स्टार्टिंग के जो प्लैनेट्स हैं इनको बोलते हैं रॉकी प्लैनेट और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. तो यहाँ पे रॉक से बने तो दीज आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. सो ड्यू टू सोलर विंड टेरेस्ट्रियल प्लैनेट लॉस्ट देयर गैसियस एटमॉस्फेयर. तो जो भी गैसियस एटमॉस्फेयर था सो इट वॉज लॉस्ट ड्यू टू सोलर विंड. टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स लॉस्ट देयर गैसियस एटमॉस्फेयर. अगर हम टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के बाद अगर प्लैनेट्स देखो तो दीज आर गैसियस प्लैनेट्स. सो ये गैसियस प्लैनेट थे. इसके बाद रॉकी प्लैनेट्स के बाद तो यहाँ पे इम्पैक्ट ऑफ सोलर विंड वॉज लेस, देयरफॉर दे कुड होल्ड द गैसेस पार्टिकल. यहाँ पे क्या था, इम्पैक्ट कम था, देयरफॉर दे कुड हेल्ड द सोलर पार्टिकल विद देम, दे कुड हेल्ड द गैसेस पार्टिकल विद देम. तो यहाँ पे गैसेस पार्टिकल्स क्या हो गए, सोलर विंड की वजह से हट गए. बट यहाँ पे सोलर विंड सन दूर था तो यहाँ पे इम्पैक्ट कम था, देयरफॉर दे कुड होल्ड सोलर गैसेस पार्टिकल विद देम. एंड बिकॉज ऑफ द सोलर विंड अर्थ आल्सो lost its primitive atmosphere. So molten magma था अंदर, outermost crust cooled down, and जो molten magma था it started moving and it developed cracks in the outer crust में क्या हुआ, crack develop कर दिए because molten magma started moving out. इस तरीके से cracks develop हो गए and gases trapped inside started coming out and it's held by gravitation force of the earth. फिर से गैसेस निकलने लगी. पहले आउटर की कूल हो रहा था तब निकली, फिर मैग्मा मूव करने लगा, फिर गैसेस निकली, एंड अगेन दीज गैसेस आर हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ. मैग्नेटिक फील्ड आ गई जिसकी वजह से क्या हुआ, ये गैसेस ट्रैप हो गई हमारे एटमॉस्फेयर में. एंड द एटमॉस्फेयर स्टार्टेड इवॉल्विंग बिकॉज ऑफ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मेनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने कॉन्ट्रीब्यूट किया एंड द एटमॉस्फेयर स्टार्टेड इवॉल्विंग. फर्स्ट पहले यहाँ पे थे एंड्रोबिक बैक्टीरिया, इन्होंने ऑक्सीजन रिलीज की. दैट फिर आए एरोबिक बैक्टीरिया एंड फोटोसिंथेसिस स्टार्टेड एंड दे स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ लाइफ. इवन टुडे वी टॉक, इफ वी सी द एटमॉस्फेयर इज स्टिल इवॉल्विंग. So most of the tree lack nitrogen. Urea is used excessive. Urea is used because most of the tree lack nitrogen. Therefore, urea is used. Excessive use of urea. Plant cannot utilize excess urea. So it is released in large amount of nitrogen into the atmosphere. Because not all the nitrogen is utilized. Therefore, it's sent back to the atmosphere. So nitrogen react with water and form nitric acid and form acid rain. So anthropogenic factor that is changing the environment and atmospheric composition of gases. Using urea is an anthropogenic factor that is changing the environment and atmospheric composition of the gases. If we talk about neem coated urea, it releases nitrogen slowly and lead to effective utilization of nitrogen. तो इसके advantages क्या है, excess of nitrogen is not released to the atmosphere, फिर pollution कम होगा, less urea is required, therefore input cost reduce होगी. तो we can work towards doubling the income of the farmer. Then arrest the diversion of urea for the other purposes. ब्लैक मार्केटिंग कम हो जाएगी एंड सब्सिडी कॉस्ट जो गवर्नमेंट देती है वो कम हो जाएगी बिकॉज डाइवर्जन कम हो जाएगा यूरिया का टू द अदर पर्पसेस. सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ नीम कोटेड यूरिया.